We get to you the big news maker from Maharashtra. Maharashtra BJP in charge, Union Minister Ashwini Vaishnaw. While the Mahayuti on the one hand is essentially pushing for big ticket reforms in the state, saying that if at all India has to become a $5 trillion economy, Maharashtra is going to give that about $1 trillion contributions. How exactly does that really happen? And why exactly is the Union Minister calling Maha Vikas Aghadi as Maha Vinash Aghadi? All this and much more on the Saturday edition of This Is Exclusive. But up first, let's take you through the headlines we are tracking at this hour. Very clearly vote in the favor of Mahayuti, and the confidence that people have shown in development emphasis of Mahayuti is clearly visible on the ground. In an exclusive conversation with Republic TV, Union Minister Ashwini Vaishnaw exposes web of lies of Maha Vikas Aghadi. The exclusive interview coming up. 10 newborns killed in hospitals in Uttar Pradesh's Jhansi. Several lapses come to fore. Expired fire extinguisher, dysfunctional safety alarms among many. No lessons learned. Republic investigation exposes the reality of maternity ward, which is right next to the NCIU. The conditions of maternity wing is worse, with no proper beds, no mattresses, broken windows. After bodies of 6 hostages found in Manipur, anger spills on the streets of Imphal. Women protest and BJP MLA's house attack. Chief Minister Biren Singh calls off for crucial meeting. It's a higher octane campaigning that's taking place in the state of Maharashtra. The Mahayuti essentially going to the polls by saying that it is a continuity of the development projects taking place in the state. Joining us on this broadcast tonight is Union Minister Ashwini Vaishnaw. Mr. Vaishnaw, thank you very much. You're campaigning in Maharashtra. The essential big push right now for the Mahayuti has been the development projects. You have hit out on the opposition saying that they have been blocking all development projects. What is it that you're really offering the people of Maharashtra? Because many would say that they are confused. I would like to cover railways. See, Maharashtra is a very big state and a very important industrial and financial capital of the country. In Maharashtra, railway network plays a very important role. To augment the railway network, we are investing 1,64,000 crore rupees in Maharashtra. About 41 projects are ongoing. We are rebuilding 132 stations. We are constructing 318 flyovers and underpasses. The bullet train project about 156 kilometers in Maharashtra. Freight corridor 178 kilometers in Maharashtra. Recently, the connectivity of Marathwada to the ports was sanctioned, 7,106 crore rupees project connecting Jalna and Jalgaon. Similarly, the connectivity for Uttar Maharashtra to the JNPT port through the Manmad-Indore new line, that was also sanctioned recently at a investment of 18,036 crore rupees. So, net, a huge amount of investment is coming to Maharashtra for development of railways. If you look at the average annual budget allocation during the UPA period, it was just 1,171 crore rupees. This year, in the financial year 24-25, the budget allocation for railways is 15,940 crore rupees for development of projects in Maharashtra. That is the kind of emphasis which we are putting on development of Maharashtra. Railways certainly has been the lifeline for a city like Mumbai, Mr. Vaishnaw. But having said that,
Multiple attempts have been made in the past, but it still remains a critical infrastructure project which requires the much needed push. Do you believe, as a minister, that you will be able to deliver this, and if so, by when? That's a very important question. I would like to address the point. See, the local railway network of Mumbai is the lifeline of Mumbai. About 65 lakh to 70 lakh people travel every day. The emphasis is to increase the capacity of the network at this point of time. How are we doing that? We are doing that by constructing 301 kilometers of new railway tracks at an investment of 16,240 crore rupees. There are 12 projects. CSMT Kurla 5th and 6th line 891 crores. Mumbai Central to Borivali 6th line 919 crore. Extension of Harbour line from Goregaon to Borivali 826 crore. Borivali Virar 5th and 6th line 2184 crore. Virar Dahanu 3rd and 4th line 3587 crore. Panvel Karjat Suburban Corridor 2782 crore. Airoli Kalwa Elevated Link 476 crore. Kalyan Asangao 4th line 1759 crore. Kalyan Badlapur 3rd and 4th line 1510 crore. Kalyan Kasara 3rd line 792 crore. Naigaon Juichandra double chord line 176 crore. Nilje Koper double chord line 338 crore. So this is a total of 301 kilometers of new tracks at an investment of 16,240 crore. Then if you look at it, in the entire railway network of Mumbai, this is the Western Railway and this is the Central Railway network. All these red points that you see, these are the points where terminal capacity is being increased. At some places new terminals are being constructed, some places the additional lines, additional platforms are being constructed, and at some places the suburban and the outstation, the long distance trains are being segregated. So combined these two items and the infusion of new technology, where we will be introducing communications based train control as a next version of Kavach, this will increase the capacity of Mumbai's railways by approximately 20%. In the first phase it will increase by about 10%, that is in a time frame of 3 years from now, and another 10% in a time frame of 5 years from now. So within the third term of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Mumbai's local railway will have undergone a significant change. Simultaneously, we are investing a significant amount in Mumbai Metro. So that will also help in decongesting the transportation network of Mumbai. Then the coastal highway has come. So coastal road, metro and increased capacity of local. Combined, these three things will make the lives of Mumbaikars easier in commuting. Do you believe, Minister Vaishnav, that the big ticket infrastructure projects which were earlier announced by the Prime Minister, even your colleague Devendra Fadnavis in Maharashtra, was that put on the back burner by the opposition, and does that essentially mean that the people of Mumbai have suffered because of the political slugfest over the big ticket infrastructure projects? It's really difficult to understand what was the motivation behind Mahavikas Aghadi's actions, by which they practically stopped all the infrastructure projects, whether it is metro, coastal, bullet, whichever project, they kind of stood as a barrier. I don't know, I don't understand why they did so, because all these projects are benefiting the middle class, these are benefiting the commuters in Mumbai. This is decongesting the city's traffic. One final question that I would like to take from you, Mr. Vaishnav, is with regards to where do you see this heading, given the fact that you've been camping in the state for quite some time now? Are you confident of maintaining power in the state of Maharashtra? See, the people of Maharashtra have very clearly seen the stark difference between the Mahayuti government and the Mahavikas Aghadi 2.5 years.
those 2.5 years of Maha Vikas Aghadi were basically when the development stopped, when the progress of the state stopped. And the 2.5 years of Mahayuti government is the period when the state has progressed by leaps and bounds. This is the time when so many new infrastructure projects have come in, so many, Pune is becoming a major IT hub, so many new projects are coming to Maharashtra. So people of Maharashtra will very clearly vote in the favor of Mahayuti, and the confidence that people have shown in development emphasis of Mahayuti is clearly visible on the ground. Can I then just ask you, because some promises that have been made, announcement like the first Indian Institute of Creative Technology that is going to be built in Mumbai, is this the reason why you're saying that the kind of promises that have been made in terms of big development push is the reason why Mahayuti should be voted to power? Is that the only reason why you're going with to the people of Maharashtra, saying that development is the key focus right now? Absolutely, people want development, people want improvement in their lives, and the example that you used, Indian Institute of Creative Technologies, is one of them. The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji said that the entire entertainment and media industry has a lot of input of technology these days. So why can't we create an institutional mechanism where people get better technology, they get better trained, and that's why the first IICT, Indian Institute of Creative Technologies, this was approved by the Union Cabinet a few months back. Funds have been approved, land has been given on lease by the state government, and immediately after the elections are over, Mahayuti government will be back in power in Maharashtra and will start the construction. This will be one of those institutes which are like IITs and IIM system. It will be similar to that. Thank you very much, Shawan. Well, thank you very much, Minister Vaishnaw, for joining us on this special broadcast. Director, the taste of success. E ono ngā pōti e whakahe. Hawana! Ha whakamanu whiriti a koe! Kamate, kamate, The division that you are seeing was not caused by this bill. It's been built up over decades during which New Zealanders have come to regard themselves as based on ancestry or one side of a partnership instead of New Zealanders. And what's worse... Honourable Willie Jackson. Mr Speaker, shame! New Zealand National. 49 votes in favour. New Zealand Labour. 34 votes opposed. Green Party of Aotearoa New Zealand. 15 votes opposed. ACT New Zealand. 11 votes in favour. New Zealand First. 8 votes in favour. Te Pāti Māori.
ngā pōti e whakahe. Kawana, ka whakamanuwhiriti a koe au. Kamate, kamate, It is the protest against the brutal killing of that 6 civilians. So for that only we are demanding the government to take actions against the cookie terrorists. $13,000 placements last year. At Aghadi, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. Ladies and gentlemen, the next speaker, a dynamic speaker, a friend of Republic Media Network, Baba Ramdev, today reaches every household in India. His vision of Viksit Bharat, coming up with Editor-in-Chief Arnab Goswami. बहुत बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के हेडक्वार्टर्स में। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हर बार जब कोई when there is a big turn in the history of रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आप हमारे साथ रहे हैं। मुझे याद है 2018 में आप हमारे साथ थे, 2016 जब हमने लॉन्च की, फिर 2018 में हमने रिपब्लिक समिट ऑर्गेनाइज़ की थी मुंबई में, आप वहाँ पे थे, सिर्फ फलाहार किया था। और फिर नवंबर 2019 में रिपब्लिक भारत के स्टूडियो में आप थे, जहाँ पे आपने योगा प्रैक्टिस करते करते हम पर ही प्रैक्टिस कर दी और आपने हमें उठा दिया अपने एक हाथ में, हमने आपको उठाया। और आज मैं यहाँ आकर के अनुभव कर रहा हूँ, मैं बीबीसी से लेकर के वर्ल्ड में लगभग बड़े बड़े स्टूडियोज़ में गया हूँ, लेकिन जो मैंने आज पूरी रिपब्लिक का ये जो नया उदय है, ये जो देखा है, यह अब तक का अप्रतिम और अविश्वसनीय और अनिर्वचनीय है। इस पर थोड़ी टिप्पणी हो जाए आपकी।
ये पिछली बार जब आप आए थे रिपब्लिक भारत के स्टूडियो में तो आपने कहा कि पंजा लड़ते हैं, तो अरे पंजे में आपके बड़ा दमखम है और मैंने इतनी बड़ी सोच, और सोच से ज़्यादा उसका एग्जीक्यूशन खाली इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर नहीं, कैरेक्टर के लेवल पर भी, और न्यूज फर्स्ट नहीं नेशन फर्स्ट के संकल्प के साथ। ये है बड़ी बात। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब हमारा मनोबल तो बढ़ ही जाता है, हमारे सारे जितने दर्शक हैं वो भी इसको लाइव देख रहे हैं स्वामी जी, एंड यू आर अ विनर एंड यू आर अ फाइटर। तो आप जब ये सब कहते हैं हमें, it means a our lot. each and every cell of this body and each and every quark or atom of this universe is fighter, and you are a fighter and you are a warrior. Thank you. एक बार जोरदार अभिनंदन। देखो, एक योद्धा की तरह ही जीना चाहिए। प्रकृति परमेश्वर ने जो सारी संरचना की है वो ऐसी ही की है, लेकिन व्यक्ति निराशाओं में, हताशाओं में, कुंठाओं में इतना खो जाता है। इसलिए भगवत गीता का विवेकानंद जी से पूछा कि आपको कौन सा श्लोक सबसे ज़्यादा प्रिय है। क्लैब्य मास्म गम पार्थ नैतत्व उपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। हमें बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और पक्के इरादे के साथ अपना सर्वस्व आहूत करके किसी काम में जब अपने आप को नियोजित करते हैं तो जो हम चाहते हैं वो कर पाते हैं। आप कहाँ एक पत्रकार इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता है, वो मैंने दुनिया में पहली बार देखा है। एक बहुत साधारण सा पत्रकार एक असाधारण कार्य कर सकता है। एक साधारण किसान का बेटा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ करके, गुरुकुल में पढ़ करके संस्कृत बोलने वाला एमएनसीज की बोलती बंद कर सकता है, वो भी हमने करके दिखाया है। लोग कहते थे ये हिंदी पढ़ने वाले, ये संस्कृत पढ़ने वाले, ये क्या करेंगे, इनको इकोनॉमी का कखा नहीं आता है। तो लेकिन आदमी के भीतर जज्बा होना चाहिए, वो जज्बा आप में है। स्वामी जी, हमने जब लॉन्च की तो हमें कहा गया आप पत्रकार हो, आप अपनी मीडिया कंपनी, अपनी न्यूज़ चैनल, अपनी पत्रकारिता में सीमित रहिए। और मैं हमेशा कहता हूं पत्रकारिता कभी सीमित नहीं हो सकती, ऐसी सोच ही गलत है। सीमाओं में किसी चीज को नहीं बांधना चाहिए, मगर आपको भी बांधने की कोशिश हुई है। और मैं न्यूज़ पॉइंट को लेते हुए पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। ये पिछले एक साल में हमने सबने देखा है, जितने लोग इधर हैं, बड़े बड़े हमारे बड़े बड़े कंपनीज के, हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ है, मोहनदास पाई जी हमारे साथ है, अजय बग्गा जी हमारे साथ हैं, बड़े बड़े कंपनीज के लोग इधर हमारे साथ हैं, निपॉन के एमडी हमारे साथ हैं। सवाल ये बड़ा साम्राज्य निपॉन का। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं आपसे कि पिछले एक साल में किस तरह की, मतलब किस तरह के ऊपर नीचे क्या क्या हुए, कैसे पड़ाव हुए? क्या आपको कभी सेल्फ डाउट हुआ? क्या आपको कभी लगा कि मेरे खिलाफ कौन है? क्योंकि कई लोग यही कहते थे कि सिर्फ पतंजलि के खिलाफ नहीं है, ये जो पतंजलि की सोच है कि फॉरेन एमएनसीज को टक्कर दे, और उसके साथ बड़ी सोच स्वामी जी कि आपने कहा कि स्केल बनाने की ज़रूरत है, मैक्सिमाइज योर स्केल, छोटा नहीं रहना है, बड़ा बनाना है, और बड़े बड़े एमएनसी, हिंदुस्तान लीवर, उनके साथ आप डायरेक्ट कंपटीशन में आए। आप पिछले एक साल को कैसे देखते हैं, इसके बारे में कुछ विस्तृत तौर से हमें बताएं। देखो, आपकी जो बिजनेस फिलॉसफी है, ये शब्द मेरे डिक्शनरी में नहीं है। और मैं तो कहता हूं किसी को भी आत्मग्लानि, आत्मकुंठा, आत्मविस्मृति में नहीं जीना चाहिए। मुझे ही क्यों, किसी को भी क्यों जीना चाहिए? हम भगवान के अंश हैं, ऋषिकाओं के वंशधर हैं। मेरा भोर यहीं से शुरू होता है। मैं 3 बजे उठता हूँ, रात को 10 बजे तक ये मेरा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ चलता है। मेरे जीवन के 2 ही शब्द हैं, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। फिर जो आएगा सो देखा जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। जहाँ तक रही बात चुनौतियों की, चुनौतियाँ मेरे सामने क्या, चुनौतियाँ तो सभी के सामने रही है। रूलिंग पार्टी के सामने अलग तरह की चुनौतियाँ रही, अपोजिशन के सामने अलग तरह की चुनौतियाँ रही, और अभी भी ये चुनौतियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी। और जहाँ चुनौतियाँ ख़त्म हो जाएं, वहाँ जीवन का मतलब क्या रह जाएगा? यह पूरा अस्तित्व ही चुनौतियों से भरा हुआ है। मैंने सबसे ज़्यादा एक बार ज़रूर पीड़ा का अनुभव किया, जब मैं आंदोलन के समय राष्ट्रीय मुद्दों के साथ लड़ रहा था, तब भी मुझे कोई पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ। ठीक है, आप यदि संघर्ष करेंगे, सत्ता से टकराएंगे, तो आपके सामने भी प्रश्न तो आएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुझे घसीटा गया,
तो मैंने कहा भाई हमारे जितने भी ये 20-20, 30-30, 50-50 लाख की जो फीस लेते हैं एडवोकेट्स, वो भी कहते आप कुछ बोलना मत। मैंने कहा भाई मैं बोलूँगा तो ज़रूर, क्यों भाई मैं कोई अपराधी हूँ। मैंने वहाँ कहा कि फिर वो बात नहीं बनी, तो मैंने एक दूसरे एंगल से, अब वो नाम नहीं लूँगा, मैंने उसको कहा कि भाई जज साहिबा को बोलो मुझे बोलने का अवसर ज़रूर दे। उन्होंने कहा कि आपको कुछ कहना है। मैंने कहा हाँ कहना है। बोले आपने काम तो बहुत अच्छा किया। मैंने कहा गलत क्या किया वो बता दो। पूरी दुनिया में अभी तक आयुर्वेद के बारे में बोला जाता है, उनके पास रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं है। हमने 100 से ज़्यादा रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन वो बना दी जो अब तक काम WHO और पूरा वर्ल्ड का मेडिकल सिस्टम नहीं कर सका, वो हमने करके दिखाया। लीवर के, किडनी के, पेनक्रियाज के, लंग के, थायराइड के, हार्ट के, ब्रेन के, आंखों के, कानों के, स्किन के, बोन्स के सेल्स को रीजुविनेट किया जा सकता है। और हमने लाखों लोगों को लीवर किडनी ट्रांसप्लांट से बचाया। यदि डायबिटीज के लिए इंसुलिन बनाने वालों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है, तो हमने डॉक्टर्स के और साइंटिस्टों की इंसुलिन छुड़वाई है। यह हमने काम किया। तो हमने कहा फिर बोले ये काम तो अच्छा है, लेकिन आपने ना वो एक ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट आता है। मैंने कहा कानून यदि गलत हो तो मैं अपराधी नहीं हो सकता, वो कानून को चेंज करना चाहिए। आप मुझे कोई ये कहे कि अपने आप को चेंज कर लो, अरे कानून तुम्हारा गलत है तो उसको चेंज करेंगे ना, उसको चैलेंज करेंगे। स्वामी रामदेव को कोई गिलानी नहीं है। जन्म से लेकर के आज तक स्वामी रामदेव ने कोई इनएथिकल, इमोरल काम नहीं किया है, और यही मेरे आत्मबल का कारण है। स्वामी जी, क्या आपको लगता है कि आपने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, इतना आपने एक्सपेंड किया कि उनको लगा कि इफ वी हिट द क्रेडिबिलिटी ऑफ स्वामी रामदेव, क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ आपके बिजनेस पे अटैक नहीं थी, क्रेडिबिलिटी तो आपके ऊपर भी बिल्कुल वही किया गया था, बिल्कुल वही डाल करके कि भाई ये साबित करेंगे कि अपराधी है। लेकिन जेल से भी एक योद्धा और शेर की तरह बाहर निकला और वो करके दिखा दिया, जिससे पूरी दुनिया अब और हैरत में कि अरे इसको तो जितना ज्यादा सताओगे उतने ही ज्यादा आगे पाओगे। जोरदार अभिनंदन है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि विदेशी कंपनियां भारतीय बिजनेस प्रणाली, बिजनेस मेथड्स, बिजनेस लॉजिक, ये बहुत बड़ी डिबेट है आज, क्योंकि हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन बनेगी, 10 ट्रिलियन बनेगी। अभी BVR सुब्रमण्यम साहब ने बहुत अच्छी तरह से कहा कि 30 ट्रिलियन बन जाएगी। 100 का टारगेट रखा है ना। हाँ 100 का, 100 साल में 100 के बजे जोरदार है। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी बनेगी तो मैं अपना भी कंट्रीब्यूशन रखूंगा। मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द भारतीय स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस एंड द MNC स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस, और आगे जाते हुए क्या MNCs को भारतीय स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस समझनी होगी या भारतीय कंपनियों को फॉरेन स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस समझनी होगी? आप इसके बारे में। MNCs हमको एक कंज्यूमर मानती हैं। कंज्यूमर तो हमको उपभोक्ता मानती है, एक कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद। हमको क्रिएटर नहीं मानती, हमको इनोवेटर नहीं मानती। हम कोई इनिशिएट कर सकते हैं। अभी भी उनके दिमाग में ये भूसा भरा हुआ है, ये कचरा भरा हुआ है, तो वो हमको एक कंज्यूमर की तरह डील करना चाहती है। और मेरे साथ तो कई प्रॉब्लम्स है ना, मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स है? ये भगवा भी मेरी प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? भगवा प्रॉब्लम है? क्यों प्रॉब्लम है? आज तक किसी मुल्ला मौलवी ने, किसी पादरी ने, किसी पोप ने वो किया जो स्वामी रामदेव ने किया? देखो मेरे सामने सो कॉल्ड जो रिलीजियस टेररिस्ट है, रिलीजियस टेररिस्ट, फिर उनको सपोर्ट करने वाले रिलीजियस माफिया के साथ फिर मेडिकल माफिया, फिर जो है मैं कहता हूँ भारतीय शिक्षा होनी चाहिए, ये मैकाले की शिक्षा बंद होनी चाहिए, तो एजुकेशन माफिया, मेडिकल माफिया, एजुकेशन माफिया, रिलीजियस माफिया, कॉरपोरेट माफिया, फिर ये इनको सपोर्ट करने वाले यूट्यूबर माफिया, वो एक अलग है। एक जान उसके चारों तरफ से घात लगाए बैठे हैं चारों तरफ से, और हमने भी ठान रखा है हम हार नहीं मानेंगे और आगे बढ़ेंगे, जीतेंगे
और देश को जिताएंगे। लोगों ने सोचा था आज जब हमने कहा सेशन लाइव स्ट्रीमिंग होगी, रिपब्लिक भारत के स्टूडियो में आएंगे, रिपब्लिक हेडक्वार्टर्स में आएंगे, तो लोगों को लगा कि स्वामी बाबा रामदेव के तेवर कैसे होंगे। कई लोगों ने ये कहा और ट्विटर में कई लोगों ने कहा वी वांट टू सी हाउ ही स्पीक्स आफ्टर ऑल दैट ही हैज गॉन थ्रू इन कोर्ट, इज ही गोइंग टू बी टोन्ड डाउन। हाँ, और इधर बड़े बड़े कंपनीज के हेड्स बैठे, अमूल के जयंत मेहता जी भी इधर बैठे हैं जी, सब लोग इधर बैठे हैं। तो हमारे कैंट अमूल का अमूल्य योगदान है हमारे ये जो सामूहिक सहभागिता के साथ सहकारिता के को एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप दिया सकता है, उसके लिए अमूल के लिए तो जोरदार तालियां बनती हैं भाई। पर सवाल पर आते हुए क्या आपको लगता है कि आपको टोन डाउन करने की कोशिश की? क्योंकि आप देखिए, आप अपने कंपनी के कर्ता धर्ता को फाउंडर नहीं है, आप कंपनी के अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो 50,000 करोड़ की टर्नओवर की आज पतंजलि ने बनाई हुई है, इसके आप यू आर द ब्रांड एम्बेसडर। क्या आपको नहीं लगता आपको थोड़ा सा टोन डाउन रहेंगे? कॉर्पोरेट सोच, लॉयर्स आपके साथ रहेंगे। ये कौन बोल रहा है? मैं आपको पूछ रहा हूँ। इनका कभी टोन डाउन हुआ है? जब अर्णव नहीं झुक सकता तो मुझसे प्रश्न पूछने के आप हकदारी नहीं तो सवाल पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे ताकि आपसे सीख सकूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप टोन डाउन नहीं है और मुझे ये भी लगता है आपको टोन डाउन नहीं करना चाहिए। है कि सुप्रीम कोर्ट वाले मैटर के बाद में मैंने कुछ मीडिया इंटरव्यूज नहीं दिया आपने? ज्यादा इंटरव्यूज नहीं, ज्यादा नहीं, एक भी नहीं दिया। पहली बार उसके बाद में किसी स्टूडियो में आया हूँ, ये जो बहुत बड़ा षड्यंत्र चला उसके बाद में, हर समय कॉन्स्पिरेंसीज। तो मैंने कई बार तो कई लोगों को बोला, मैंने कहा जिसको जो करना है अपनी ऐसी तैसी कराओ। माफ़ करना, मैंने कई मीडिया हाउसेज को भी बोला, बाद में बोला अरे वो स्वामी जी वो तो प्रवाह में ऐसा हो गया। कम से कम 10 मीडिया हाउसेज ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से उनके सीईओ ने माफ़ी मांगी। कुछ को तो मैंने माफ़ कर दिया, एक दो को तो अभी भी मैंने हिट लिस्ट पे रखा हुआ है। मैंने कहा अभी साष्टांग दंडवत करो। क्या फालतू की बातें। कभी भी आदमी को ऐसे छिछोरी हरकतें नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा मैंने जिंदगी में कोई अभी मैंने बोला इमोरल इनएथिकल काम नहीं किया, कोई देश के खिलाफ जाने की तो बात ही नहीं। और जिस दिन मैं गलत करूंगा ना, कोई मुझे बचा नहीं सकता। जिस दिन गलत करूंगा, और जब तक मैंने गलत नहीं किया और मैं कर भी नहीं सकता, सिर कट सकता है, गलत नहीं कर सकता, तो भाई क्यों आप ये छेड़ाछाड़ी क्यों करते हो? तो ये बात तो छोड़ो, अब तो ये सोचो कि आगे करना क्या है। अभी 50,000 तो सवाल मैंने पूछा था इंडियन स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस एंड एमएनसी स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस, आपने इसका पूरा रिप्लाई नहीं किया। आपने आपके दूसरे तरफ कौन है? एमएनसीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, विदेशी कंपनियां। हम फूड में देश की सबसे बड़ी कंपनी है, और जिसको नॉन फूड बोला जाता है, हेयर केयर, डेंट केयर, स्किन केयर, ये सब, इसमें खाली हमसे एक कंपनी आगे है टर्नओवर वाइज, और उसका नाम है यूनिलीवर। और दूसरी कंपनी कोई हमारे पड़ोस में भी नहीं है। पहले मेरा लोग मजाक उड़ाते थे जब मैंने यहीं दिल्ली के अंदर प्रेस करी थी कि हम 5,000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे तो लोग हंस रहे थे। जब 10,000 करोड़ बोला तो लोगों ने बोले जो है बाबा का दिमाग खराब हो गया। अब जब पतंजलि का ग्रुप टर्नओवर 50,000 करोड़ का हो गया, अब बोलती बंद है। अरे बोले ये तो कुछ हो रहा है। तो ये है, दुनियादारी ऐसी है। स्वामी जी, आपकी बिजनेस फिलॉसफी क्या है? आपका बिजनेस टारगेट क्या है? व्हाट इज योर टारगेट? अभी थोड़ी समय में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी भी आने वाली है, मुझे बोला गया, मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी व्हाट इज योर बिजनेस टारगेट? क्या आप हिंदुस्तान लीवर के आगे जाना चाहते, यूनिलीवर के आगे जाना चाहते? अगर जाना चाहते हैं तो क्यों? क्योंकि आपका जो लाइफस्टाइल है कुछ तो बदला नहीं है। यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद द मनी। जी, जैसा पहले था स्वामी रामदेव, पूरा स्ट्रक्चर और कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं है। जी स्वामी जी अमेजिंग अमेजिंग। ये तुम करके दिखाओ। ये नहीं हुआ मैं शर्टलेस वंडर नहीं बन रहा। तो देखो, प्रोडक्ट फॉर मासेज, ये एक अकेला पतंजलि ब्रांड है। अमूल भी इधर है, वो हमारे इस मामले में प्रोडक्ट फॉर मासेज, प्रोडक्ट फॉर मीडियम क्लास एंड प्रोडक्ट फॉर प्रीमियम क्लास। अमूल को छोड़ करके कोई दूसरा हमारे इस कंपटीशन में नहीं है। अभी जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स, बिग कॉम्प्लीमेंट जैन भाई, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जी। प्रीमियम प्रोडक्ट्स में अमूल से हम एक चीज में आगे हैं, अमूल से हम गाय के घी में आगे हैं।
वो गाय का घी का ब्रांड हमने ऐसा स्टेब्लिश कर दिया, उसमें कोई हमारे आस पड़ोस में ठहर नहीं सका। बाकी हमारा कंपटीशन वैसे अमूल से था भी नहीं, नेस्ले से ज़रूर था, आगे भी रहेगा, वो एमएनसी है। अमूल खूब आगे बढ़े, पूरा देश और देश के ब्रांड आगे बढ़े। मैं तो पतंजलि का नहीं, मैं तो रिपब्लिक से लेकर के किसी भी भारतीय ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए, उसको फ्री में प्रमोट करने के लिए तैयार रहता हूँ। मेरा मकसद पैसा नहीं है, मेरा मकसद देश है, देश हित सिर्फ सर्वोपरि है। नॉट जस्ट फॉर पतंजलि। और एक बात कहूँ रिपब्लिक के बारे में, 0.0000001% फॉरेन इक्विटीज कंपनी में नहीं है। दूसरी बात, जो टेक्नोलॉजी आपको दिखाई, जो स्टूडियोज दिखाई, पूरी इंप्लीमेंटेशन हमारी टीम ने की, कोई फॉरेन कंसल्टेंट ने आके नहीं की। तो पूरी हम भी पूरी 100% स्वदेशी सोच है। इक्विटी में अभी लिस्टिंग हुआ है कि नहीं हुआ? तो लिस्टिंग हो गए तो वो तो आ जाएगी। वो तो एक जरूरत नहीं है, वो प्रोसेस उसमें। स्वामी जी बस आज तो ऊर्जा है इस कॉम्प्लेक्स में। आई थिंक ही इज द ट्रम्प ऑफ इंडियन बिजनेस। स्वामी जी, जैसा आपने कहा कि जो स्वदेशी वाली सोच है वो हमारी भी है, आपकी भी है, और आपसे मुझे लगता है कि प्रेरणा हमें भी मिलती है जब हम आपको सुनते हैं। आपका ग्लोबल स्टूडियो में भी देख करके आया, और ग्लोबल एंड मेड इन इंडिया। ये एक बहुत बड़ी, और एक चीज और देखी मैंने, 98% लोग यहाँ यंग हैं। एक बार उसके लिए भी जोरदार अभिनंदन। भारत युवा देश है, तो वो यहाँ देखने को मूर्त रूप में मिलता है। अभी अर्णव पूछ रहे थे कि आपका टारगेट क्या है। मेरा टारगेट पैसा नहीं है, मेरा टारगेट परमार्थ है। मैंने एक संकल्प दिया है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर रिपोर्ट से लेकर के, और दूसरे भी यहाँ पर होंगे, आएंगे, मुझसे पूछते हैं व्हाट इज अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ पतंजलि। तो मैंने कहा पतंजलि का अल्टीमेट बेनिफिशियरी समाज है, देश है, राष्ट्र है। We are using 100% profit for charity, prosperity for charity. This is our philosophy. अर्थ से परमार्थ की यात्रा है ये स्वार्थ की नहीं, अर्थ से परमार्थ की। पैसा पुण्य के लिए लगना चाहिए। मुझे कोई महल नहीं बनाना, मुझे तो अकिंचन रह करके, हमारे ऋषियों का सिद्धांत है, वैयक्तिक जीवन में तपस अपरिग्रह, वैयक्तिक जीवन में दरिद्रता, सार्वजनिक जीवन में वैभव। इसलिए तो हमारे यहाँ कहते हैं ना, तन में गरीबी मन में फकीरी दिल में दया राख जोए, संतरी संगत में बैठ मारी सुरता साच कमाई जोए, हेली मारी निरब रही जोए, दुनियादारी हो गणगारी जन भेद मत दी जोए, हेली मारी निरब रही जोए। तो ये दुनियादारी में बड़े ओगुण है, बड़ा उथल पुथल मामला है। सब यूँ सोचते हैं अरे बाबा को कुछ नहीं चाहिए, फिर बाबा ये सब क्यों कर रहा है। मैंने कहा तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? स्वामी होकर के ये सब क्यों कर रहा है? मैंने कहा मैं 3 बजे उठ करके रात को 10 बजे तक मैं मेहनत करता हूँ ना, मैं अपने आप को खपाता हूँ ना, तेरे को परेशानी क्यों हो रही है? सन्यासी को इतना काम क्यों करना चाहिए? मैंने कहा मैं काम कामयाबी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं काम भारत माता की सेवा के लिए कर रहा हूँ, मानवता की सेवा के लिए कर रहा हूँ। काम क्यों नहीं करना चाहिए? निकम्मे होकर के बैठना चाहिए, प्रमादी अकर्मण्य होकर के बैठना चाहिए। तो लोगों ने मेरे सन्यास पर प्रश्न उठाए, क्या सन्यासी को ये सब कारोबार करना चाहिए? मैंने कहा कारोबार नहीं, ये व्यापार नहीं, ये करोड़ों लोगों के उपचार और उपकार की भावना से 5 लाख लोगों को हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। और अभी जो आगे हमारा ऑयल पाम और एडिबल ऑयल मिशन है, 5 लाख लोगों को और देने वाला हूँ, 10 लाख लोगों को। मैंने यहाँ पर सुना कितने हजार कितना था यहाँ का भी काफ़ी बड़ा आंकड़ा था, अभी बता रहे थे अणव, 1800 लोगों को यहां पर काम मिला हुआ है। तो मैं 10 लाख लोगों को तो रोजगार दूंगा, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पतंजलि को आगे लेकर के जाऊंगा। जब भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की होगी और 50 ट्रिलियन की होगी, तो उसमें एक आहुति स्वामी रामदेव और पतंजलि की भी होगी। ये सोच होनी चाहिए, तब बनेगी इकोनॉमी। 5 ट्रिलियन की और 50 ट्रिलियन की कुछ लोग बकवास करते रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने देखा कुछ सोशल मीडिया के भी मेंढक हैं, कुछ फुदक करते रहते हैं, कुछ लोग इधर उधर बकवास करते हैं। भारत में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मतलब केवल अंधेरे की बात करते हैं, केवल निराशा की कुंठाओं की बात करते हैं। तो मैं तो एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता।
और ज़रूरी भी है। आपने स्वामी जी जब ये बात करी, क्योंकि हम एक इंडिया इकोनॉमिक समिट कर रहे हैं, आप जब विदेश जाएं तो बहुत से लोग हैं जो वहाँ पतंजलि का इस्तेमाल अब विदेशों में करते हैं और देश में इसकी चर्चा है। तो जो यहाँ के भारत से बनी, भारत में उपजी इन चीज़ों को जब विदेशों में जब इसका इस्तेमाल होता है तो आपको लगता है कि वो असल में विकसित भारत है, क्योंकि अब मेड इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया की डिमांड बाहर। ये देखो एक सोच है और ये देश में हमें सोच खड़ी करनी होगी। ये जुनून, कोई भी काम दुनिया में जुनून से होता है। उस जुनून के पीछे फिर पूरा एग्जीक्यूशन होना चाहिए, बैक एंड प्लानिंग होनी चाहिए, उसका अल्टीमेट कंक्लूजन क्या होगा वो सब होना चाहिए। लेकिन जुनून, शौर्य, वीरता, पराक्रम से कोई काम होते हैं। टोयोटा इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया एक छोटे से देश का? सही बात। ह्युंडई छोटे सा, एक साउथ कोरिया में खुद गया हूँ, एक छोटा सा देश, और आज से 50 साल पहले उसकी कितनी दरिद्रता का हालात थी। वहाँ से सैमसंग इतना बड़ा कैसे ब्रांड बन गया, ह्युंडई इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया, और एप्पल इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया। चलो तो अमेरिका है, वहाँ तो महासागर है। छोटे छोटे देशों के, यूरोप के कुछ छोटे छोटे देशों के इतने बड़े बड़े ब्रांड्स को हम देखते हैं। जब कोलगेट एक वर्ल्ड ब्रांड हो सकता है जिसमें केवल और केवल केमिकल्स हैं, तो दंत कांति वर्ल्ड ब्रांड क्यों नहीं हो सकता है? सही बात। ये सोच होनी चाहिए हमारी। तो ऐसे तो सैकड़ों, एलन मस्क को लोग बोलते हैं अब तो ट्रंप के साथ में एक बड़ी जोरदार गठजोड़ हो गया है और एक ही दिन में 250 लाख करोड़ रुपए उसका मार्केट कैप भी बढ़ गया, और भी आगे पता नहीं क्या क्या होगा। लोग कहते हैं एलन मस्क को इतने ये कर दिया, इतनी टेक्नोलॉजी लिया है। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, वी विल प्रोवाइड हेल्थ फॉर वर्ल्ड। ये हमारे पास में ज्ञान है, विज्ञान है, प्रज्ञान है, अनुसंधान है। हम पूरी दुनिया को मधुमेह से मुक्त करेंगे। हम पूरी दुनिया को बीपी से, शुगर से, थायराइड से, अस्थमा से, अर्थराइटिस से, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से, कैंसर से बचाएंगे। कौन बचाएगा? हमारे पास में वो पूर्वजों की विरासत है जिससे हम पूरी दुनिया को स्वास्थ्य भी देंगे, समृद्धि भी देंगे, शांति भी देंगे, और युद्ध से नहीं, दुनिया बुद्ध से और शुद्ध होकर के योग से चलेगी। ये देंगे हम। ये है भारत की सॉफ्ट पावर। तो इस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जो हमेशा कुंठाओं में जीते रहते हैं और दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं, उससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमें एक काम तो ये ईर्ष्या खत्म करनी पड़ेगी देश से। अरे दूसरे बढ़ रहे हैं, आप बढ़ने दो ना, अरे अच्छा होगा ना। और ईर्ष्या के साथ साथ हमें कुंठाओं से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं तो सुबह उठ करके रोज एक ही प्रार्थना करता हूँ, भगवान मेरे पड़ोसियों को सदा सुखी रखियो, क्योंकि वो दुखी रहेंगे तो और मुझे सताएंगे। भगवान मेरे देशवासियों को सुखी रखियो, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यक्ति जो है ना, वो अपने जो अड़ोस पड़ोस वाले ना, वो सबसे ज्यादा आपको दुखी रखते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ तो प्रार्थना ही यहाँ से शुरू होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सही बात है। और आपने जो थोड़ी देर पहले, मुझे लगता है इतने लोग यहाँ पर हैं, एक बार मैं पूछ ही लेती हूँ सबसे, मुझे लगता है कितने लोग हैं जिन्होंने पतंजलि का इस्तेमाल किया है? जरा एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। देखिए, अब देख लीजिए सर, पूरा ऑडिटोरियम हाथ खड़ा कर रहा है। कोई ना कोई। अब बताइए मुझे। दंत कांति, किसी ने केश कांति, किसी ने हनी, किसी ने च्यवनप्राश, किसी ने आंवला एलोवेरा, किसी ने गिलोय। कोरोना में तो गिलोय एक बात बताऊं आपको, कोरोना में भी मुझे पर बहुत प्रश्न चिन्ह लगाए गए। इस देश में यदि योग, आयुर्वेद और गिलोय ना होता, लोग जो है देसी काढ़ा ना पीते, तो करोड़ों लोगों की लाशें बिछ गई होती। लोग बकवास कुछ भी करते रहे, लेकिन ये दुनिया बचेगी तो भारत से बचेगी। और एक लास्ट बात इस संदर्भ में कह देता हूं, लोग कहते हैं पूरी दुनिया में ईसाई इतने, इस्लाम को फॉलो करने वाले इतने, 50 से ज़्यादा देशों में सरिया और फलाने क्या क्या लागू है, इतने देश में इतने लोग कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं। मैं कहता हूँ वर्ल्ड के 200 से ज़्यादा देशों में 500 करोड़ से ज़्यादा लोग योग में, आयुर्वेद में और सनातन जीवन पद्धति में विश्वास रखते हैं। ये भारत के सनातन धर्म की सबसे बड़ी विजय। जोरदार अभिनंदन है इस सत्य का। कोई कुछ भी बकवास करता रहे, अब मोटू को पतला पतंजलि करेगा। बहुत वो कर भी चुका है। सनातन मूल्यों पर चल करके ही दुनिया बचेगी। ये सनातन धर्म की विश्व विजय की जो बात होती है ना, कुछ लोग ये विश्व गुरु भारत, ये परम वैभवशाली भारत, ये जगत गुरु भारत, ये 5 ट्रिलियन, ये 10 ट्रिलियन, ये 30 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी का 2047 तक अमेरिका से बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाने का जो सपना है, तो उसके लिए बहुत से लोग बहुत जो है फूहड़ तरीके की, घटिया तरीके की बातें करते हैं। लेकिन
आखिर पूरी दुनिया को हम एक दृष्टि से नहीं, हम धर्म भी देंगे पूरी दुनिया को, अर्थ भी देंगे, हम पूरी दुनिया के सत्य संकल्पों को भी पूर्ण करेंगे और पूरी दुनिया पूर्णता की, तृप्ति की अनुभूति कैसे करें। हमारी दो तरह की यात्रा, आत्मनिर्माण की और आत्मनिर्वाण की। अब ये बड़े बड़े हिंदी के शब्द बोल दिए मैंने, थोड़ी इंग्लिश कमजोर है मेरी। पहले के समय में आपने कई बार इस बारे में बात की कि कैसे एक मल्टीनेशनल कंपनीज का अटैक आप पर रहा, लेकिन अभी जब आप कहते हैं, थोड़ी देर पहले आप अर्नब से कह रहे थे कि ये मेरा जो भगवा है इसकी वजह से भी मुझ पर हमला हुआ, तो आपको लगता है कि बहुत से लोग अपनों में भी ऐसे हैं जो हमला करते हैं आप पर? है ना, भारत में भी योग के, आयुर्वेद के, सनातन के, भगवा के, ऋषियों की विरासत के विरोधी भरे पड़े हैं और बड़े खूंखार हैं, बड़े खूंखार हैं। उनको खौफ लगता है स्वामी राम, अरे ये भगवा गया। अरे मैंने गांव की भाषा में बोलूं तो हमने एक बार बोल दिया था, फिर वीडियो वायरल हो गया। मैंने भाई उनका क्या बिगाड़ा ये बताओ। गांव की भाषा में बोलो, उनकी खूड खोद दिए, कि उनकी भैंस खोल ली, कि उनकी पूंछ पाड़ दी, क्या काम कर दिया भाई, क्यों परेशान है भाई, मैंने तुम्हारा बुरा क्या किया है। तो बात खाली यहाँ तक नहीं है, ये पूरा नैरेटिव है इस देश के अंदर और वो यहाँ से नहीं चल रहा है। उनको मिडिल ईस्ट के तेल और गैस के इस्लामिक देशों के पैसे आ रहे हैं, उनके यूरोप के और चर्च के भी पैसे आ रहे हैं, किसी को चाइना से पैसे आ रहे हैं। अब स्वामी रामदेव को तो एक कौड़ी चाइना से नहीं आएगी, क्योंकि मैं तो कम्युनिज्म वाला हूँ नहीं, मैं तो स्पिरिचुअलिज्म वाला हूँ, नेशनलिज्म वाला हूँ। मुझे कोई मिडिल ईस्ट से, कोई यूरोप से तो उस तरह से मदद नहीं मिलेगी जैसे 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा कुछ कानूनी कुछ गैर कानूनी आ रहा था, इस्लाम को बढ़ाने के लिए, ईसाईयत को बढ़ाने के लिए, कम्युनिज्म को बढ़ाने के लिए 1-1 लाख करोड़ रुपए अलग अलग सोर्सों से आ रहा था। स्वामी रामदेव किसी की बैसाखियों पर खड़ा नहीं हुआ, इस देश के करोड़ों लोगों के विश्वास पर खड़ा हुआ है। वहाँ तो ज़कात देते हैं, वहाँ तो अलग अलग प्रकार के बहुत सी बातें आती हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इस्लाम वाले इस्लाम को बढ़ाएं, अपने मदरसों को बढ़ाएं, मस्जिदों को बढ़ाएं, अपने चर्चों को बढ़ाएं, अपने धर्मांतरण का कार्य भी कर रहे हैं, वो सब करते रहे। अरे तुम्हारे ऊपर हमने एक भी व्यक्ति का मजहब नहीं बदला। वो थोड़ी सी सेवा करते हैं, डिस्पेंसरी चलाते हैं। मदर टेरेसा जी का मैं सम्मान करता हूं उनकी सेवा के लिए, लेकिन मदर टेरेसा ने यह धर्म तरफ परिवर्तन किया कि नहीं किया? जब उनको भारत रत्न दिया जा सकता है तो मैं उससे 100 गुना ज्यादा भारत माता का रत्न हूं। मैंने उनसे 100 गुना ज्यादा सेवा की इस देश में, लेकिन उनको भारत रत्न मिलेगा क्योंकि उनके ऊपर टैग एक दूसरा लगा है ना। ये मामला गड़बड़ है। स्वामी रामदेव ने मजहब नहीं बदला किसी का, और मेरा मजहबी एजेंडा भी नहीं है। मेरा एजेंडा भारत माता की सेवा है। मैंने किसी को कभी भी किसी धर्म के अंदर मैंने कभी सुना कि स्वामी रामदेव ने किसी को मुसलमान को हिंदू बना दिया, ईसाई को किसी को हिंदू बना दिया। और करोड़ों लोग योग आयुर्वेद को फॉलो कर रहे हैं। मैं किसी को मजहबी व्यक्ति बनाने में विश्वास नहीं करता, मैं तो इंसान को इंसान बनाने में विश्वास रखता हूँ। और फिर भी लोग प्रश्न करते, करने तो क्या फर्क पड़ता है। तो स्वामी जी, ये तो पूंजी है आपकी। मुझे लगता है आप जब कहते हैं कि इतने लोगों को आपने योग दिया और कितने लोगों को आपकी पतंजलि के सामान से फायदा भी हुआ, तो मुझे तो यहाँ पे बैठे सब लोग जब हाथ खड़ा कर रहे हैं कि वो पतंजलि के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, तो आप सोच लीजिए और कहाँ जाए। आपको यहीं से गवाही मिल रही है। मेरे साथ कितनी बार योग कर चुकी है, अभी तो वैसे ज्यादा मोटी तो नहीं हुई है, लेकिन अब जो है जब रिपब्लिक बढ़ रहा है तो थोड़ा बहुत तो बढ़ेगी सुचरिता भी। लेकिन है जो है ये खुद भी मैं तो देखता हूँ, जितने भी एंकर हो ना सब एलोवेरा जेल लगाया करो, नहीं तो मेकअप करने के बाद चमड़ी खराब हो जाएगी। ये वाला स्वामी जी सेशन अलग से करेंगे, ये वाला सेशन अलग से करेंगे बाद में। क्योंकि यहाँ पर जो बहुत सारे लोग आपको सुनने आए हैं, मुझे लगता है कि उनकी उत्सुकता इस बात से भी है कि जो भारत में जो एक तरह से अपना काम शुरू करते हैं, और आप एक बहुत बड़ी प्रेरणा है उनके लिए, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि भाई राष्ट्र प्रथम रखकर आगे काम करो। जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट करा। जब मैं हरिद्वार गया मेरे पास चढ़ने के लिए एक साइकिल भी नहीं थी, ना स्कूटर था, ना कोई गाड़ी थी, लेकिन एक हौसला था, एक विजन था, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने 18 घंटे काम किया। पिछले 50 वर्षों से एक दिन भी मैंने छुट्टी नहीं की है, छुट्टी की छुट्टी, नो रेस्ट।
मैं कहता हूँ आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है, चरई वेती स्वस्ति पंथाम अनुचरिम सूर्य चंद्रमसा भी, यही जीवन है। मुझे एक बात बताइए, जब आप ये कहते हैं, क्योंकि जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में भी यही बात कही जाती है कि चरई वेती, वो बिना रुके बिना थके काम करते हैं। आपको लगता है कि इस देश में अगर संस्थाओं को आगे बढ़ना है तो उसके लिए इस तरह की प्रेरणा भी ज़रूरी है? देखिए, मोदी जी ने देश के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है। उनके क्रिटिक्स भी इस बात को मानते हैं, आलोचक भी, कि भाई इस आदमी का मेहनत में मुकाबला नहीं कर सकते, इस आदमी का बोलने में मुकाबला नहीं कर सकते, इस आदमी का जो पब्लिक कनेक्ट है उसमें मुकाबला नहीं कर सकते, इस आदमी की सोच का मुकाबला नहीं कर सकते, इस आदमी के एजुकेशन का मुकाबला नहीं कर सकते, इस आदमी की जो कूटनीति है, राजनीति और जो वैश्विक नीति है, विदेश नीति है, उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इस आदमी की फिटनेस का भी मुकाबला नहीं कर सकते। देखो 73-74 साल, अभी 74 लग जाएगा, 73 साल की उम्र में कितने एनर्जेटिक हैं। कल भी शाम को हम मिले तो एकदम ऊर्जा से लबरेज थे। तो मैंने कहा जब इतनी सब चीज़ों में मुकाबला नहीं कर सकते तो मुकाबला करोगे किस में? तो लोग व्यर्थ में आलोचना करते हैं। देखो मोदी जी का व्यक्तित्व जैसे एक हिमालय जैसा, अरे अपना व्यक्तित्व बढ़ाओ ना और पुरुषार्थ करो। देखो आलोचना करते करते राहुल गांधी जी ने एक भारत यात्रा की, तो जितना उन्होंने पुरुषार्थ किया उनको फल मिल गया। तो वो सीखे ना मोदी जी से, भाई उन्होंने यात्रा की, कुछ तो फल मिला ना उनको। पुरुषार्थ सभी को फलता है। इसलिए मैं तो एक ही स्लोगन देता हूं, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। और वो पुरुषार्थ की पराकाष्ठा आपको पतंजलि में दिखती है, स्वामी रामदेव में दिखती है, वो अर्णव में दिखती है, वो सुचरिता में दिखती है, और वो जो है नरेंद्र भाई मोदी में दिखती है, वो अमित शाह में भी दिखती है। और जितना मैं तो पक्ष विपक्ष के बीच में कहता हूँ, मैं तो विपक्ष शब्द को ही पसंद नहीं करता, प्रतिपक्ष शब्द को मैं ज़्यादा प्रश्रय देता हूँ और निष्पक्ष होकर के बात कहता हूँ। सब मिलके पुरुषार्थ करो, इसमें भूल जाओ कौन लीड जो है रूलिंग पार्टी में है, कौन अपोजिशन में, पक्ष विपक्ष प्रतिपक्ष, इन सब से को भूल करके देश को आगे बढ़ाओ। मुझे लगता है आज जिस सेशन के बाद वो पुरुषार्थ यहाँ बैठे सब में नजर आएगा, क्योंकि आपके जो प्रेरणादायक शब्द हैं वो उन तक सब तक पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी इस बातचीत के लिए, समय के लिए, और यहाँ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्टूडियो में आने के लिए। एक ये इकोनॉमिक समिट है जी। इकोनॉमी क्या का हिंदी में ट्रांसलेशन क्या है? अर्थ। पुरुषार्थ का निष्कर्ष ही अर्थ है। इसलिए पुरुषार्थ करेंगे, अर्थ मिलेगा, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, भारत आगे बढ़ेगा। और भारत जब स्वस्थ, संगठित और शक्तिशाली होगा, उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, तब हमें अमेरिका से लेकर के, यूएन से लेकर के, चाइना, रसिया से लेकर के कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। इसी के साथ बोलो भारत माता की जय। $13,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals.
It's 8 p.m. and you're watching Live and Breaking with me, Shawan. Our focus right now is on the tragedy that struck a hospital in Jhansi. 10 innocent lives lost. Who's responsible for the lives that have been lost in the hospital? All this and much more, but first let's take you through the headlines we're tracking at this hour. After 6 hostages found dead in Manipur, unrest intensifies in state capital Imphal. Massive protest staged. BJP MLA's house attacked. As unrest and violence intensifies in the state of Manipur, MHA takes cognizance. Sources say 3 BJP legislators likely to resign. Republic investigation exposes the glaring lapses in the Jhansi hospital tragedy. Expired fire extinguisher, no emergency exits come to fore. Devkinandan Maharaj holds Dharm Sansad in Delhi. Chorus for a Sanatan board amplifies. Infiltration becomes the biggest talking point in election season. BJP says India appeasing infiltrators. There are glaring lapses on the part of the hospital authorities in Jhansi. 10 innocent lives were lost. Who exactly is really responsible for it? Republic Media Network's reporters on the ground did a detailed investigation to find out
who's really responsible for it. We have spotted at least 5 lapses. Let's take you through the 5 lapses that our reporters found on the ground. These are criminal negligence, ladies and gentlemen. Expired fire extinguisher. I'll just try and show you here that these extinguishers that you see right now on your screens that were basically found at the hospital premises turns out to be expired. So they were not even supposed to be used. And they were still at the hospital premises. And that's lapse number 1, the criminal negligence, if I may say so. It's the expired fire extinguisher. Let's take you through the others. The other lapses that our team found after doing a detailed investigation. Let's take you through the second. After the expired fire extinguisher, what is it that our reporters have found? Faulty safety alarms. So what you see, the safety alarms that were supposed to go in, that did not work, and resulted in a situation that the evacuation could not have been done at the right time, caused delay in the entire process. There were no emergency exit in the hospital. So what you see right now on your screens right now, these are the emergency exits that were basically shut. So there is a lock here that has been put in place. So there is no way that someone could have actually used these very places to come out. So no entry or exit as far as the hospital entrances are concerned. Poor quality oxygen concentrators. Now, this is on the basis of the report that has already been submitted, the preliminary report that has been prepared. Let's take you through the others that are coming in. Now, these are all the lapses that our reporters have also found after going through the details of it. Ladies and gentlemen, 10 lives have been lost. Could they have been saved had the hospital authorities worked in alacrity? Let's take you through the details of this report that has been filed by my colleague Akil. Let's take you through the details now coming in after the tragic fire. Jhansi Hospital's negligence, which has essentially been exposed. This, ladies and gentlemen, are reporters who have actually entered the hospital and found gross negligence on the part of the hospital authorities. There are no beds. There are broken windows in the maternity ward. These are some of the details that are emerging. We'll try and take you through the inside visuals of the dilapidated maternity ward of the Jhansi Hospital. These are visuals that were taken by reporters on the ground after they managed to enter, where they found that there were no beds. This is all part of the maternity ward. Let me try and see if we can go across to Akil, who's joining us on this broadcast. While we stay full frame with these visuals that are coming in, we'll go back full frame with these visuals. Akil, these are visuals that were taken by you once you had entered the hospital. Help our viewers understand what is it that you witnessed. Well, Shawan, if you see, it's not just the NICU ward, the neonatal care ward. Apart from that, if you just talk about the hospital in general, the condition of Lakshmi Bai Hospital in Jhansi is very abysmal. If you talk about the maternity basically ward, I went inside the maternity ward and the condition of that maternity ward was not even good. If you talk about the beds over there, apart from bed, if you talk about the mattresses or any appliances over there, so there were several appliances which were broken. Apart from that, if you talk about ceiling fans, what I found alarming, that there were 2 ceiling fans of which their wings were tilted. So apart from that, if you see the basic amenities which must be in a hospital was not completely in the correct form. And apart from that, we also went inside to check that whether those fire extinguishers which have been put in place in the maternity ward is still not functioning. So there were several lapses, not just in the NICU ward. Apart from that, we also cross-checked it in the maternity ward. So it raises several questions on the hospital administration, that why there are several lapses. Apart from that, the second thing, Shawan, I would like to highlight that if you talk about the investigation part, the investigation is going on at 3 different levels. First one is a magisterial inquiry has been ordered in connection with the case. Second investigation, which was ordered by the UP Chief Minister, Mr. Yogi Adityanath, in that investigation, which will be done at a divisional level. So the divisional commissioner and the DIG will be part of this investigation, and the report for that
that divisional inquiry will come out within 24 hours. If you talk about the third prong strategy, the third one will the investigation will be done by the health department, and this is a 4-member committee panel which will submit its report within 7 days. Shawan. Yes, Shawan, back to you in the studio. Well, in fact, what we will do in a short while from now is going to take our viewers through what is it that you found when you went inside the hospital, the report that you filed a short while back of the condition of the hospital, number one. Number two is with regards to how the authorities essentially responded to this tragedy. Has there an FIR been registered so far? If it hasn't been fired as yet, then why is there such a delay? First, this is a report that was filed by my colleague Akhil when the forensic team had reached the hospital premises. Simple question, ma'am. Why no FIR has been launched so far in connection with the case? You should ask the local authorities. Ma'am, you are a senior authority, ma'am. We have been asking this question to the senior authority as well, local authority as well. Why no FIR has been launched so far in connection with the case? Please. Ma'am, why single no FIR has been launched so far in connection with the case? Can we just ask this question to the SSP as well? I'm going to just ask this question to Miss SSP. Why no FIR has been registered? Why there have been 0 FIR? 10, ma'am, just a second. See, ma'am, what has happened? That 21. If you see what has happened, that 10 lives have been lost. Why there is no FIR so far in connection with the case? Inquiry is going on. Inquiry is going on. But there must be some accountability. There must be some accountability. One FIR must be registered in connection with the case, ma'am. Ma'am, just a second, ma'am. Ma'am, see, here you see, we just questioned the SSP over here, and she is not ready to answer because what we have been seeing that almost 18 hours have passed. If you see what has happened, that the incident took place last night around 10:30 p.m. Since then, what we have been seeing that it's 6 p.m. in the evening, but no single FIR has been launched so far in connection with the case. And the UP police, I just questioned the senior officials in the Jhansi police department, and they have no answers that why not even a single FIR has been registered so far in connection with the case. With video journalist Hitesh Akhil for Republic TV. Just one simple question, ma'am. अरे एक जो अभी We have been asking this question to the senior authority as well, local authority as well. Why no FIR has been launched so far in connection with the case? Please. Ma'am, why single no FIR has been launched so far in connection with the case? Can we just ask this question to the SSP as well? I'm going to just ask this question to Miss SSP. Why no FIR has been registered? Why there have been 0 FIR? 10, ma'am, just a second. See, ma'am, what has happened? That 21. If you see what has happened, that 10 lives have been lost. Why there is no FIR so far in connection with the case? Inquiry is going on. Inquiry is going on. But there must be some accountability. There must be some accountability. One FIR must be registered in connection with the case, ma'am. Ma'am, just a second, ma'am. Ma'am, see, here you see, we just questioned the SSP over here, and she is not ready to answer because what we have been seeing that almost 18 hours have passed. If you see what has happened, that the incident took place last night around 10:30 p.m. Since then, what we have been seeing that it's 6 p.m. in the evening, but no single FIR has been launched so far in connection with the case. And the UP police, I just questioned the senior officials in the Jhansi police department, and they have no answers that why not even a single FIR has been registered so far in connection with the case. With video journalist Hitesh Akhil for Republic TV. Getting in some more breaking news right now. Investigation committee of the UP Health Department has been formed in connection with the fire incident at Jhansi Medical College. 4-member committee has been formed under the chairmanship of DG Medical Education. Investigation committee will give a detailed report of the case in the next 7 days. A 4-member committee now being formed at the UP Health Department to look into the alleged lapses on the part of the hospital authorities. We'll try and see if we can also put out the report that was filed by Akhil a short while back about the lapses. One, the doors, the exit route was completely blocked, and the fact that fire extinguishers that were basically kept inside the hospital premises, they were expired. Take a look at this report.
Last night around 10:35 p.m. a tragic incident happened in UP's Jhansi district. Right now you can see I'm just standing at the very hospital where that unfortunate tragic incident took place at NICU, where approximately 54 kids, 54 infants were hospitalized. Here you can see there were two different wards inside that SNCU. Here you can see on the wall of this hospital is written Navjat Shishu Gahan Chikitsalaya Kendra. So what has happened that fire basically broke out, and after that there were several infants got trapped, and then what has happened that 10 infants died in that incident. I would like to request my VJ to move forward and show you the visual of this entire area. So what has happened once, because this is the single entry and exit point. After that incident took place, those workers, staff members, apart from that, if you see nurses over here who were present inside that NICU ward, they basically came out through this window. So basically first they broke this window and then they came out through this window, and after that here you can see these are the multiple lapses which has happened last night. If you see, I would like to request my VJ to move forward and show you the visuals of these fire extinguishers. There were very limited number of fire extinguishers which were placed over here inside this hospital premises. Here you can see, I would just like to show some of them. Here you can see the manufacturing date of this fire extinguisher is 10th of June 2024, and the expiry date of this fire extinguisher is 9th of June 2025. And apart from that, if you see, this one was manufactured in 2024 and expiry date of this one is 2025. But if you see, this one was manufactured in 2019. I would like to request my VJ Hitesh to move forward and show you the visual of these fire extinguishers. This was also manufactured in 2019. This was also manufactured in 2019. So it raises several questions on the part of the lapses on behalf of the hospital administration. Apart from that, if you see, this very premises in NCIU wing has not got proper appliances over here and the proper medical care facilities, because if you see the kind of infrastructure, because I would like to move a little bit forward and show you the visual of this attendant waiting room. Here you can see the proper arrangement has not been done. Here you can't even find proper blanket or bed sheet or mattresses over here. The kith and kin of those patients come over here and they just sit on the floor itself. So it raises several questions. If you see the proper light arrangement and the fan, the broken wings of those fans, you can see. So these basically raises several eyebrows in terms of the management facility at this Jhansi hospital. So we'll have to wait and watch for the further investigation to continue in that direction, because if you see, UP Chief Minister Mr. Yogi Adityanath has said he basically has formed a committee, two-member panel committee, which is going to probe this entire matter, which is headed by the DIG of Jhansi range and Commissioner. So both of them will basically follow this probe, and once the report will come out, then only the things will be clearer that what actually transpired at that point in time and what actually led to the incident, which basically resulted in the tragic loss of 10 infants' lives. Following the fire tragedy in Jhansi, Uttar Pradesh, the government has now served notices to 80 hospitals. This is pertaining to the situation in each of these hospitals. The notices are regarding the safety guidelines, whether they are essentially being followed or not. This is largely a reality check that is essentially being done by the government following the tragic incident that took place in the medical college in Jhansi, resulting in the death of 10 infants. Well, shifting focus now to Manipur, where the situation still remains extremely grim. A short while back, the government has taken the decision to snap internet services for about 2 days. And now, Manipur government has also written to the Ministry of Home Affairs regarding the reimposition of AFSPA in 6 police station areas of the valley. Remember, this comes after the situation actually becoming extremely volatile, particularly in districts like Jiribam, where bodies were recovered from Barak River, and thereafter
the encounter that actually took place in the area, with at least 10 Kuki insurgents being killed in that encounter. This remains extremely volatile right now. Let me quickly go back to my colleague Anirudh, who's joining us live from Imphal. Remember, due to the internet services that have been snapped there, movement has been completely restricted. Anirudh, what's the latest that you're picking up? The government essentially writing to the Centre for Reimposition of AFSPA, which essentially means that a crackdown is now imminent. Yes, the Manipur government has recently written to, in fact today have written to the Ministry of Home Affairs to review the imposition of AFSPA in the 6 valley-based police stations, and have also asked the Ministry of Home Affairs to review the decision. They have mentioned that the cabinet deliberated upon the decision last night. Last night an emergency cabinet meeting was held, which we highlighted today morning, that at around 11 p.m. last night, an emergency cabinet meeting was called soon after the first 3 bodies of the hostages were recovered. And after the emergency cabinet meeting today, the Manipur government has written to the Ministry of Home Affairs to review the decision of declaring disturbed areas in the 6 valley-based police station and thereby reimposition of the AFSPA. The Manipur government have essentially written to the Ministry of Home Affairs to review the decision and take into consideration for withdrawal of the disturbed area tag and the reimposition of AFSPA in the 6 valley-based police station, of which 3 of them are in Imphal West and 1 in Moirang, that is in Bishnupur, and in Jijiribam, another police station which has been declared as a disturbed area, and AFSPA has been reimposed. Meanwhile, additional forces have been deployed in Manipur, and we are getting to know that more additional forces will be deployed if required. Today, after the violence broke out, shawan across Imphal. Now also even there are mob stationed in various areas. We are getting to know that in Kaisampat also tear gas have been fired upon protesters. Kaisampat is the location which is very close to the BJP state headquarters in Manipur, and it is being feared that the mob might attack the BJP headquarters in Manipur as its next target. To disperse the mob, just now I have a breaking input that tear gas cells were also fired by the security forces to disperse the mob. Shawan. Well, thank you very much, Anirudh, for getting us the latest details. A story that we'll be tracking very closely, with AFSPA being reimposed in at least 6 of the police station areas. It is an indication that perhaps the government of Manipur is largely looking at a crackdown post what we saw in Jiribam. It is the protest against the brutal killing of that 6 civilians. So for that only we are demanding the government to take actions against the Kuki terrorists. Director, the taste of success.
13,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. had a transformative impact on India's financial landscape. A man whose vision has led to the Edelweiss Group becoming one of the top investment firms in India. Rashesh Shah embarked on a journey to build a world-class financial institution in 1995. At the time, the firm worked on a private equity syndication and mergers and acquisitions and focused on advisory services. Over the years, it has grown into becoming one of India's most influential financial institutions, offering a wide range of services from wealth management to investment banking and asset management. Under Rashesh Shah's leadership, the Edelweiss Group
has not only cemented its place in India, but also expanded its footprint globally. Join us as we welcome Rashesh Shah, the man who turned a small financial boutique into a financial service firm with a net worth of over 8,000 crore rupees. Calling in for a fireside chat along with Niranjan, and also joining us would be Mr. Sandeep Sikka. Oh yes, joining Mr. Rashesh Shah on stage is another visionary leader who's been put at the forefront of innovation of the asset management and investment industry. Sandeep Sikka joined Nippon Life India Management Asset Management Limited in 2003, and he was quickly elevated to the role of CEO in just 6 years, becoming one of India's youngest CEOs in the asset management industry. In fact, Mr. Sikka has played a pivotal role in the growth of the businesses, both domestically and internationally. Under his leadership, the company has also acquired Goldman Sachs India business. Throughout the course of his nearly 3-decade-long career, Mr. Sikka has been associated with numerous prestigious organizations, including CII, FICCI, and the Reserve Bank of India. Niranjan Narayanaswamy will be moderating this session. Thank you, Suesha. Okay, so we have a legend in the house. Mr. Rashesh Shah has seen different governments come and go. You've been around for so many decades, Mr. Shah. In Mumbai, you're a name to reckon with. Sandeep Sikka, one of the most influential mutual fund name in India. I'll start with you, Mr. Rashesh Shah. This year, we've kept the theme of the India Economic Summit as Viksit Bharat Bullseye, right? You've seen the UPA era, you've seen the Modi era, and you've seen the changing financial markets over the decades. Are we on track for the 50 trillion at 2047 that we talk about? Yeah, actually before we start, I want to thank all of you, and truly very honored to be here for this very prestigious event, and thank you to Arnab, and congratulations for building such a fabulous campus. Really very impressive, and very honored to be here amongst all of you. And it is actually very appropriately themed conference today, because I think India is at a stage. So, you know, we always keep on thinking a lot of things in India remain the same, but a lot of things keep on changing. So India has been growing. For the last 30 years, we've been steadily growing. Our economy has actually, you know, doubled in size every 6 to 6.5 years for the last 30 years. But what has changed is now we have scale at $4 trillion, and we'll continue to have this. So this growth rate, we will become about 11-12 trillion by 2035. We'll become, say, about 25-30 trillion by 2047. But this is, we are now compounding at scale. So I call it the golden age of compounding for India is underway. And when I see this 5-acre campus and all that, I say this is India not at $4 trillion, but this is what India is going to be in the next 10 to 15 years. So I think the scale that we are seeing, what we saw 15, 20 years ago to what we are seeing now is what is going to be amazing. And along with that, what is also changing, and especially last 8-10 years we have seen that, is we are moving from a country of savers to a country of investors. Yes. And I think part of your theme today also covers that, is we had a very strong Indian banking system. But I always believed that we have very strong banks. We have close to 300 crore accounts now in the bank. But banking was about saving money. It was not, when you and I keep money in the bank, we are saving money, we are not investing money. Yes. What we are seeing last 8-10 years, and along with the mutual fund industry and the capital markets and insurance growth, is we are now starting to invest money. And as we have seen, any family that saves money is only doing half the job. When you start investing that smartly and get return, the family income really starts galloping away. And that is what we are seeing in India. So we are compounding at scale. We have still a long runway to go, and along with that, we are also changing our color as a country from a country comfortable with saving to a country now getting comfortable with investing. So well said, and I can actually familiarize myself with that, because we as journalists, most often we don't have time sometimes to even have a lunch, or because the role of journalists and our work hours are different. It's crazy sometimes, right?
But as you grow and as you start having families, and this is the question I wanted to ask Sandeep Sikka, I didn't know about mutual funds too much until recently, right? And I think the role of mutual funds in the growth of the Indian story, like I said, saving is one part of it, investing changes it altogether. And the role of mutual funds in doing that for the Indian, I wouldn't just say middle class. Today, I read somewhere about tier 2, tier 3 cities, the number of people who are investing in the mutual funds industry, right? Sandeep, what have you seen? No, thanks a lot for having me. And it's very important for me to start by saying I think mutual fund industry is going to play a very big role in Viksit Bharat, Atmanirbhar Bharat. Yeah. Because many times what we think mutual fund is about just investing, creating wealth. Yes. But I think what you have to understand is, I mean, as Rashesh also mentioned, in India, people always confused between savings and investments. Yes. Money kept in the bank was assumed it's going to create long-term wealth, but actually it was never the case. So what we are seeing right now is, I think the fact that you, like you mentioned, you were not aware of mutual funds, you know. Yes. Believe me, you are majority of India did not know about it. But we are very happy today, I think, because fundamentally it was always mutual funds were subject to market risk, has moved to mutual funds sahi hai. And the fact that in February, Prime Minister of India, Prime Minister Modi, mentioned about the role of the mutual fund, because we not only convert household savings for capital formation, a lot of companies which are coming in the morning, we had Ashish talking about new IPOs and all, mutual fund industry is playing a very big role there. But I think the fundamental thing that the mutual fund industry, to your question, the big change that has happened about 20 years back or even 10 years back, the industry was dominated in bigger cities. Yes. Today, you'll be happy to know 54% of all new SIPs that come to the industry are coming from smaller cities and towns. And one thing we need to give it, and as an industry, professional industry body, we give a lot of credit to what we have done. But how did this start? The foundation was started by Prime Minister Modi when you see three things change the fortunes of mutual fund industry. Jan Dhan, when you had 70 crore bank accounts which opened. Demonetization, maybe liked by people, not liked by people, but the formalization of the economy, money coming in. Unified KYC, all these things created. So 2014, when Prime Minister Modi came to power at that time, the mutual fund industry AUM was only 9 lakh crores. And today, and when he in February he talked about it, mentioned at that time it was 54 lakh crores. And today it is 70 lakh crores. So I think this is actually a classic case of small investors from small cities and towns investing and participating in the India growth story. Yeah. But the most important thing I'm going to touch upon is what the finance minister in the morning talked about, that it's very important to be friendly with all foreign countries, but we have to take care of our economic interest. Yeah. What mutual fund industry is doing is with 25,000 crores of monthly SIP, 3 lakh crores, which means technically speaking, we have created an environment where our dependence on FI money has reduced. So never before in the history of country, last month you saw FAI money going out, but 90,000 crores went. Yes. But the market did not tank. So this is the power, and this is what we say Atmanirbhar Bharat. Yeah, and all of us were worried what's happening in the stock markets. And of course, Mr. Rashesh Shah follows the financial markets very closely. I mean, he's invested his entire life there. You spoke about investing. If you invest, when a family invests, I mean, you invest for yourself, for your family, but for a country to invest and grow richer, you need to create jobs, right? And when you talk about Viksit Bharat, it's not possible to do that without creating jobs. Now, as you've seen the financial markets change and evolve over the years, do you see job creation also happening as it should? Yeah, actually, it's an important question to ask because as we get older, we also realize that the financial markets don't exist for only the investors to create wealth. That has to be one of the objectives, but it also has to create jobs for the country at large. The problem in answering your question is that we don't know. We can only experience the anecdotal evidence. But even today, if you ask me or if you ask Sandeep, how many people are employed indirectly and directly in the mutual fund industry, the answer will be, we don't know. If you ask us how many people are employed in the capital market, the answer will be, we don't know. If you ask me how many are employed in banking, we don't know. So I think there have been jobs that have got created, but we need to create data about jobs. Yeah. And I keep on saying that to all the government agencies and regulators. We do hundreds of filings to SEBI and RBI and IRDA. Yes. All the time. We should be asked to file how many jobs that we are creating. Yeah. And I think this investing impetus will become more visible, more powerful,
and will really allow us to articulate that, yeah, the stock market is doing well, investors are doing well, but the country is also doing well because we are creating jobs. Yeah. Because there are about 100 million people who are investing in the stock market or mutual funds, but there are maybe another 400, 500 million people who are also wanting jobs. Yes. So, and they have to be connected. So I think it is creating jobs, but we need to show evidence of that. We need to articulate that. And we, all of us in the industry, need to speak about, because I think the two main part of investing which gets lost amongst, returns, and the market is up and we made 30% return, and if we all talk about stocks that we pick that go up, I think ultimately we have to remember, the idea is to create jobs, but the idea is also to help in capital formation. Yeah. So we do believe that stock market should not be the end objective, it should be the means to an end. Yeah. And the end is, can we create jobs and can we really create capital formation efficiently for the country? Because when it is only via banking, it is not as efficient, and that is what we have seen last 30 years, as the stock markets have also played a role in capital allocation, as the insurance industry has started playing a role in capital allocation and capital formation. Our economic growth has picked up. We used to be at 4-5% growth. Now we are going to about close to 6-7% growth. I think India's target for Viksit Bharat, if you want to, I think you have this thing, be the eye of the bullseye. What we call the bullseye. I think for all of us in India, the bullseye has to be, can we get to 10% growth without overheating, without humming and hawing and panting out there? We have got close to that, but every time we get there, we are like out of breath. We are like, like an overheated car. Yeah. I think we need to getting to a, GDP growth of 10%, which is available in India with our investment, with our consumption, with our savings, all of that when you put together, we can get to 10% growth. And the government, the industry, the investors, all of us have to get together and try and debate saying, should that bullseye target be 10% growth for India? Because at 10% growth, we will truly progress to a per capita income of $8,000-10,000 from current $3,000. I think, you want to talk about policy as well. I'll come to policy in just a bit. But I want to go back to Sandeep and ask him a question about mutual funds. Because I remember when we first saw the ads or heard the ads of mutual funds on TV, it said, mutual funds are subject to market risks. Please read the terms and conditions carefully before investing, right? To what you said, I found that interesting. You said mutual funds, sahi hai, right? Is it as simple as that? Because when you look at the trends of people investing from villages, tier 2, tier 3 cities, has it become a credible, more solid source of asset creation? How are the trends changing what you have seen in the last few years? That's very interesting. So let me first start with the data point. 10 years back, mutual funds were just 0.8% of the financial savings in India. Today it is 8%. So that tells you the trends are changing. But I think what's the pulse that we get, I think when we go to small cities and towns, the mutual funds was something, it was an alien product. People did not understand. And people used to always have questions. And I give a lot of credit to the regulator. It's one of the most simple products. It's complicated in the mind, but it's actually very simple. And what we have seen, you'll be surprised, is if you were to buy the Google Trends, the data tells you the mutual fund word is being searched more in smaller cities than bigger cities. The fastest growing cities are, let's take Nasik, Durgapur, smaller cities. And also what's happening is, mutual fund is becoming the first port of call. Because ultimately, it's not very easy to invest. And all of you, like a journalist for you, you have a day job. And I hope you don't start taking mutual funds as your day job, then we won't have a job. I should confess, because once you start investing, right, some of these guys give you a dashboard, okay? They give you an app, and then you check what's the valuation, has it gone down, come down? But it's crazy. Last 2 weeks has been crazy. The markets are going up and down. So this is exactly what makes it complicated. I think in long-term investing, you have to keep emotions out. It's a lazy way of investing. You have to invest and keep it for long term. So all the investors who have made money, I think our data shows us, investors who are very smart and who try to trade, and which is also what has come out from SEBI also, investors who trade very often, they don't make money. They make money for somebody else. Yeah. But I think if you create wealth for yourself, focus on your day job, don't look at the portfolio every day. I'll stop doing that. I'll just add out here, in the investing world, we always use this phrase
where we say investing should be something you do so that you can sleep at night. It should not be something that keeps you awake at night. Exactly. So one more trend I should highlight, very interesting. Till now, investing was done for a very different reason. For the first time this Diwali, we saw a very different change. Highest volume of mutual fund ETFs was traded on the stock exchanges on Dhanteras. Till now, Indians wanted to invest in gold physically. Yes. Last year it was 80 crores, this time it's almost 450 crores. So the trend is changing, and it's changing faster than what we can expect. And today we have 5 crore unique investors. And I think the day will not be far away. I think you talked about 2047, when I think we will be $50 trillion economy. I think it's our dream and wish. I think every Indian household will be mutual fund investor by then. You're saying by 2047? 2047. Well, I mean, of course, I think the way things are going, and he's seen, financial markets change. I mean, from the traditional days of savings in the bank to where we are today, Mr. Rashesh Shah, I want to ask you, because when you look at the culture of investing, when you talk about the culture of investing, what makes India an investment destination? Or do you think there's more we can do in terms of policy? I felt you wanted to talk about it, but you stopped short of doing that. Yeah, actually, I think the culture of investing is underway in front of all of us. What we're also seeing, what he spoke about gold, we're also seeing it about real assets. REITs have been one big one. When you buy into a REIT, you are actually buying an ownership in that office complex, that IT park. The same way InvIT, when you buy into an InvIT, you are buying into ownership in a road. So I think the investing culture started where you bought a share of Asian Paint, and then you now are a very small owner of Asian Paint. Now we are converting that same ownership of a company into ownership of gold, ownership of a office complex, ownership of a road. So we are actually financializing a lot of assets. Ultimately, every asset can be financialized. Any asset that has a cash flow can be financialized, and that is where the financial architecture of India has evolved. We still have a long way to go. But I think in the last, at least about 15, 20 years, we have started with mutual funds, and we go to InvIT, REIT, AIFs, all of that. All of this instrument, they all look very exciting, but ultimately what they're doing is they're allowing the right asset to be connected with the right investor who can get the cash flow there. Because that is what ultimately investing is all about, that I can put my money maybe on a longer term basis, which gives me a slightly higher return and creates capital for the country. So this entire, I think, proliferation of AIFs, InvITs, REITs have also been another big jump in our investment culture. So earlier it was only banks, then we got banks, mutual funds, capital markets, brokerage, asset management companies, AIFs, InvITs, REITs, and I think this proliferation will allow us to become more and more an investment country. And if you see, I think ultimately we have to step up our investment, our growth rate. Because currently the capital we have, and we are Atmanirbhar on capital. I think India is now fairly self-sufficient on capital, and it's a very bold statement to make, because we always feel we are capital scarce. But I saw the same thing happening on the food front. 30, 40 years ago, India had food scarcity. Now we are fairly self-sufficient. I don't know whether we had surplus or not, but we become fairly self-sufficient on food. What last couple of years have shown us, we have become fairly self-sufficient on capital. At this about 7% growth rate, we have enough capital. We should step it up and use more capital. So if we can step up our growth rate to 8, 9, 10% and use our capital and the capital that comes from overseas through FDI and FPI, we can get to 10% growth rate. And all effort, the capital markets, the investment professional, the government, all of that is how do we get there. And we need a lot more innovation. We need whether ETFs or, like we ourselves created a Bharat bond kind of a product which allows people another product, another opportunity to invest. So I think that would be very, very exciting in the next few years. What we saw in banking, we see in capital market, we see in insurance industry, in the financial sector, if we can create that. And the last part of this that should connect is connect with entrepreneurship. And I know we have quite a few people in the audience who have been entrepreneurs. But what has been, even the growth of capital market, as I said, creating wealth for investors is one byproduct. But it should create jobs, it should create capital formation. The third thing it should create is entrepreneurship. And 30 years ago, 20 years ago, entrepreneurship was mainly
in Bombay, Delhi, Bangalore, kind of, it was restricted there. Now, as we speak about tier 2, tier 3, tier 4, we are seeing entrepreneurship also now. We are seeing entrepreneurs from Kanpur and Varanasi and Bhavnagar and Surat and Indore also now accessing capital, accessing investment capital, which allows them to grow. So I think that will be another very exciting part of India, is we can democratize entrepreneurship in India. And we saw that. I think it happened in sports, about 30, 40 years ago, where Kapil Dev came from, earlier all cricketers came from Mumbai, Delhi, Bangalore, Chennai. And then suddenly in the 80s, we had Kapil Dev who came from Chandigarh. And then now we have a whole, we had MS Dhoni, all of that. So what happened in cricket, I think should